Hello? Hello. Subhashan Bhaiya? I am here. Meet Mr. Lekh Tandon. He is on the phone. नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ आप भी आनंद से होंगे। भगवान की दया है। बस सबके ऊपर भगवान की ही दया है। बहुत अच्छा लग रहा है आपकी आवाज़ सुनकर। सिर्फ एक बार मैंने आपसे बात की है कोलकाता से, और आज आपने समय दिया हम लोगों के लिए, बहुत खुशी की बात है। और शुक्रिया जी, शुक्रिया तो हम लोग आपको कहेंगे, क्योंकि आज आपसे कुछ बातें करके हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा। जी जी Lekh ji, Subhashan Bhaiya, myself and all Shankar Jaikishan fans are fans of you also. Your movies, you have been associated with them. And on behalf of the SJ fans and you, I would like to have a little conversation along with Subhashan Bhaiya. I will briefly introduce you and then we will start the interview. Okay? Yeah. Okay. Okay. Thank you. And please speak up a little louder because we are recording. Okay? Yeah. Okay. Hello, Shankar Jaikishan fans. This is your friend Lakshmi Tumala. Today I have with me a distinguished guest, Mr. Lekh Tandon, who accepted my invitation to have a conversation with our own Subhashan Pandey Bhaiya and yours truly about his association with the legendary composer duo, Shankar Jaikishan. Mr. Tandon directed many a hit Hindi movie and later moved on to direct TV serials. He started his career as an assistant director and soon turned into a very successful director, directing 14 movies, out of which 5 had music composed by Shankar Jaikishan. As an actor, he acted in 6 movies. He later turned to the small screen to direct TV serials. Mr. Tandon won a Filmfare Award for Best Screenplay for Dulhan Wahi Jo Piya Man Bhaaye, and his movie Andapali was an entry in the 39th Academy Awards for Best Foreign Language Film. Please join me in welcoming Mr. Lekh Tandon. Namaste, Lekh ji. Please share with us your fans, Thank you so much. your memories and thoughts on Shankar Jaikishan and their music. Lekh ji, when was the first time you met Shankar Jaikishan? That was somewhere in 49 or something. I see. Maybe. Uh-huh. That maybe 1940 also, they were there or not, I don't remember, in the Prithvi Theatre. Mm-hmm. I used to visit theatre. Okay. And in the theatre, later on my memory was that I was assistant in Kitab Sharmaji, Mm-hmm. and I still go to, on the Sundays, I used to go for the theatre performances. Wow. And over there, Mm-hmm. in between, we used to meet each other in the theatre. Mm-hmm. And they were there. And my memory goes, Shankar Jaikishan, Mm-hmm. both were there in the theatre. Shankarji used to play tabla, Mm-hmm. and he used to play harmonium. Mm-hmm. And there was a Bengali gentleman who was the manager, who was the music director. Under them they were working. Okay. And then Raj Sahab had made film Aag, so that he wanted to make the second film. Mm-hmm. Second film for that he was, and once a while he used to go to theatre. Raj Sahab used to go along with the in Pune. Now in Pune he heard, Jaji, Shankarji, they narrated their composition. Mm-hmm. And Raj Sahab liked those compositions, and he wanted to add that to Barsat. Mm-hmm. And the Bengali gentleman who gave music for Aag refused to share any credit with them, and he wanted the whole, the contract and the credit completely for himself also. He didn't agree. Okay. Then Raj Sahab removed him and took over Shankar Jaikishan as music director for Barsat. Yeah, and the rest is And he liked them so much. And they were always together in the theatre, because they were very good.
very good actors, very good musicians, and very good people, very jovial people. Jaiji was quite jovial. Shankarji was very tough, manly, and पहलवान जैसे शंकर जी थे. वो दंगल करने भी जाते थे. जहाँ दत्ताराम से मुलाकात हुई, दत्ताराम ने उनकी जैसे मुलाकात कराई, वहाँ से वो फिर वापस थिएटर में आए. The man in between is Dattaram. Okay. Then, as the film started, as Prasad, and it was a super hit, the songs were hit, and then it became a team by itself. Yeah. And then other people started signing them. And I was still assistant that I had met a girl and we were engaged, and then the engagement was broken and I was after the girl. So Jaiji one day rang me up and said that, hey, where are you? I was assistant to Raj Shah. He said, I'm in the studio. He said, be there, I'm coming. So, look at the concern. He's a big man, big shot, big music director. And he came over and told me, Lekh, don't go for this girl. I stay nearby. I see her reactions and what she's up to, forget it. Then that girl was out of my mind. He actually helped me to clean up. Now that was the personal relations. Yeah. But then a time comes that I get a chance to direct the film. I was in FC Mira. And FC Mira's office was in famous Malakri. In the famous Malakri, on the third floor, was the second floor was the music room of Shankar Jaikishan. And I was just waiting outside the lobby, and down comes Jaiji. And he says, Lekh Babu, क्या कर रहे हो? मैंने कहा मेरा सबकी पिक्चर साइन किया है. तो oh my God, we don't want to work with them. This is a promise we are taking. Okay, come on, let's go in. He just went into the office. He said, hey, have you signed Lekh? He said, yes. Then we are giving the music. Picture is out of the prices you want. In those days, Shankar Jaikishan never signed any film. Film is sold whoever the star is. What was the movie you worked with? The first movie you worked with Shankar Jaikishan? Professor. Okay, Professor. Okay. Great music. The teaching my ma'am that is come. Then they came out and said, Lekh, you come to the music room tomorrow morning. 9 o'clock we'll be there, and then we talk of the songs. I said, Jaiji, I can't come from Chembur by bus by 9 o'clock. Hey, कितने बजे आएगा तो बोलना. Maybe 10 बजे आ जाओ. Okay, come by 10 o'clock. When I went in the theatre music room next day in the morning, I was totally shocked. It was Shankar Ji was there, Jai was there, Dattaram was there, Sebastian was there, then Surinder Ji was there. I mean, who that he was not there from the beginning? Everybody was there. I got shocked and then surprised and honored. I said, I can't go. I said, no, we don't want to hear the story. We narrate 18 songs with words and tune. Then you select what suits you, then we'll give you, then you do that. But I said 5. 5 minutes select and we engage. So what is that you need? I said, me 2 more songs I need. Then they said, okay, come to my house tomorrow. Then he said, and he gave me another 1 song recorded. One was left in the clone. When he gave me that song, he said, listen, Lekh, I'm giving you a song that is forever. That is 1 song. Perfect. Now, remember, friendship, which they, मेरे साथ उन्होंने निभाई है. जब तो मैं पार्ट ऑफ थिएटर एज ए विजिटर था, पृथ्वीराज फैमिली से कनेक्टेड था, तो मैं उस कनेक्शन से जो उन्होंने मेरी इज्जत की, एंड इज वेरी रिमार्केबल.
very remarkable being such big people. भाई इतना बड़ा नाम हो चुका है, एक ऐसे आदमी तो बिल्कुल परवाह भी नहीं करते, नहीं बड़े छोटे छोटे की, लेकिन ये वेरी वेरी गुड. मतलब कभी वो every day after 11-12 he used to go to Gaylord, Bombay. Gaylord में हर रोज उनका होना था. Every day he will have a tea and from there he'll go back home and then have lunch and all that and then he will start working after that. But वही कभी कभी मिल जाए तो कभी वहाँ भी बुला लेते थे, वहाँ बात कर लेते जब मैं सोचता था और एक बैठो काट लिया. मेरे हमें उन्होंने कभी छोटा नहीं समझा, उन्होंने खुद अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझा. Quite late in their career, मतलब है anything that the differences between the two of them, never. Something very great was there between the two of them. Each realized कि दूसरे की क्वालिटी क्या है, नॉलेज कितनी है, ही इज परफेक्ट इन विच साइड, क्लासिकल में किधर में. अब दोनों ही तो दिया अपना इसमें हमारे पार्टी में तो मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर बाय शंकर जी, because the classical tunes, classical music was being used, and Shrivinder was there. Shrivinder was as it was connected to Shankar ji, because Shankar ji was mostly working along with Shrivinder. आप देखिए कि आप वो बड़े होते जब गाने बनते थे तो बिल्कुल डिसाइड करते थे. उनकी दोस्ती अपने में इतनी थी, दैट वाज आल्सो रिमार्केबल, कि एक दिन जय जी बड़े सैड से ऑफिस में आए और पूछा कि शंकर क्या हुआ. कहते यार मेरा ब्रदर ना मेरे पैसे चोरी करके भाग. क्या? हाँ. कितने गए? 4 लाख गया. नहीं क्या बात है भाई, की evening sign 1 or 2 more films and collected all the money and gave it to Jay. Here is 4 lakh. Oh, he does. दोस्ती एक दूसरे रिश्ता निभाना, ये बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी थी. जैक्सन जी की बढ़िया क्वालिटी थी. शंकर जी, शंकर ज्यादा पहचान से ज़हनी तौर पे मतलब वो कोई चीज अटैच होना बड़ा सा मुश्किल था. लेटर ऑन बाय when Jaji died, after that he fell in love with a girl beside his wife and then कुछ हुआ. बट मैं उनके काम करने का, उनके स्टाइल का, ये कितनी इन्वॉल्वमेंट थी उनकी अपने काम में कि कभी कभी तो पता चलता था यार कि किस ट्यून से कहाँ से आया है. आप सोचते रहो, पता बाद में चलता है कि ईरान से आया. कभी कभी पता चल क्लासिकल तो जानते थे, इंडियन जानते ही थे, लेकिन और फॉरेन में ट्यून जो थी वो ज्यादा मिडिल ईस्ट में देते थे और मिडिल ईस्ट से उन्होंने बड़ा कुछ दिया. वो आप करके फॉरेनर थे, मिडिल ईस्ट के थे, उनका म्यूजिक उनको बड़ा पसंद था. बट आप देखिए मैंने आज कल मेरे ख्याल के परसों मैंने यूट्यूब में देखा रशियन president of the state is singing song Avara. And a time was there when in Russia, first name known to the Russian was Jawaharlal Nehru, second name was Rajkumar Gurdyaga. पिक्चरें रिलीज होती थी राज कपूर की, प्राइवेट सब. Why in Russia? In Russian, particularly, it was not their language. Mongolia, it was not their language. Yeah. But they were very fond of their music and of their picture. एक बार, I met some Iranians who came over, और दिन उनके थे अपना फास्टिंग पे, तो उन्होंने मेरे घर में बैठ के हम सब ने शराब पी. तो क्योंकि उनका फास्टा रोजे थे तो हमने शराब पूछी नहीं है. तो उन्होंने कहा जी रोजा खत्म हो गया, हम शराब पी सकते हैं. तो शंकर जी जी सब और लेकिन जो हंसी किताब मजाक गाते करते खाते क्या पीपल. द्राक्षा तो जब तो खैर बड़ी मछली होती थी द्राक्षा. एंड जब उनका म्यूजिक वहाँ बनता था, आप देखिए
एक बार ऐसा हुआ कि एक नाइट रात में गाना बनना, एक नाइट told them at 5 o'clock in the evening, and next day we recorded the song. Song was written. वो एक दिन एक बहुत बड़े पुराने एक्टर थे, तो राजकोट के गेट में, स्टूडियो गेट में शोर मचा रहे थे। तो सिक्योरिटी वो नहीं उनको अंदर जाने देगा। हाउ डिड यू कॉल राज कपूर एज राज कपूर? दीज आर बॉस कॉल एंड वेरी रिस्पेक्टफुली। कौन है, क्या बात हुई? मैं गया तो कहने लगा जी लेकिन राज कपूर ये निसार आया। अरे मेरी जमीन निकल गई। मास्टर निसार, old time singing hero of when from the first films that started, आना माना के बाद साइलेंट फिल्में के बाद पहली फिल्में आई, उसमें वो गाने वाले उन पिक्चरों के हीरो आज वो सड़क पे थे। Because I had heard about him from Raja, and मैं आइए आप, मैं अंदर लेकर अंदर इनको स्टूडियो में ऑफिस में बिठाया, ऑफिस में बिठा के मैं राज साहब शूटिंग कर रहे थे। बोला कि मास्टर निसार आए। जैसे राज साहब खड़े हुए, उनके हाथ से सिगरेट गिर गया, फट करके भागे बाथरूम अपना मुंह धोने के लिए, और ताकि उनके मुंह से स्मेल ना आए, और वो भागे आए। मुझे कहा जम जाओ, उनको बिठाओ, चाय पिलाओ, पिलाई, और वो आए। म्यूजिक दत्ताराम का था पिक्चर के लिए। इट वॉज दत्ताराम हु वाज टू गिव द म्यूजिक फॉर दैट वेरी फिल्म, बट ही कॉल्ड बोथ शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत, सबको बुलाया रातों। खैर हुआ क्या कि वो जब उन्होंने कहा राज मेरे पास काम नहीं है, तेरे पास इतने एक्स्ट्रा देते, एक दिन मुझे डेट दे दो, आज का मुझे काम दे, तुम्हें दिखाने के पैसे, लेकिन मैं भीख नहीं मांगने देने वाला, मैं पैसे ऐसे नहीं देने वाला कि तू मुझे दे दे मैं लेके चला जाऊँ। तो उन्हें चाय पिलाई, ठीक है तेरा फर्ज है, बट मैं ऐसे उन्होंने कहा मास्टर जी आज नहीं, मेरे पास आज काम के लिए काम, मैं आपको शब्द खड़ा नहीं करूंगा, मैं कल बताता हूँ आपको। उनको चाय बाय पिला के गाड़ी से उनको घर जहाँ गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहां भिजवा दिया। रात जाके 12 बजे पैकअप कर दिया। 100 एक्स्ट्रा स्टूडियो में थे, जाके वो बैठे और घर बैठ के रोने लगे। इतने में बेगम को मुझे राजकोट पता चला, वो आ गई। 12 बजे 1-2 बजे घर आने का सवाल ही कोई नहीं था। वो तो पता नहीं क्या हो गया। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया। या देखो इतने बड़े आदमी का, मैन हु बॉट द फर्स्ट रोल्स रॉयस इन इंडिया, उसके लिए हमको इतनी तकलीफ हुई। साहब रात सबको बुलाया, दत्ताराम आए, शैलेंद्र आए, हसरत आए, जयकिशन आए, हम शंकर जी आए, सब ने बैठ के रात में गाना बनाया। सुबह उठ के रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके नेक्स्ट डे उसको बुला के इट वाज अ यूनिट लाइक म्यूजिक दत्ताराम का है, मतलब फ्लाइट कॉमन है, उनके सिस्टम की है, उनकी जूनियर की है, राजसाद की है, प्रॉब्लम राजसाद की है, सब आ गए। तो खैर इसे जिंदगी चलती रही। और बीमार हो गए। बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में थे, तो मैं उनको हॉस्पिटल में मिलने गया। तो मैं अब लिवर हो चुका था उनको, तो जीने की उम्मीद नहीं थी। मैं अंदर गया तो मुझे कहते देख बाबू, दादी का ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ। ये क्या इतनी आसानी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, शोभ कैजुअली, ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हैं कि मैं मसूरी जा रहा हूँ। शोभ कैजुअली। Then he bought in between he bought a Bangalore, then he bought a land, and then he called me there. क्या वो बंगला सब दिखाया। मतलब मैं पुराने एसोसिएशन की वजह से मेरा तो मकान तो मेरी ऐसी पोजीशन तो नहीं थी। मेरे से बहुत बड़े बैठे थे, बड़े बड़े लोग थे जो उनकी जान पहचान तो उनकी थी। फिर ओल्ड वन ऑफ दी ओल्ड पीपल, ओल्ड एसोसिएशन, ही हैड रिस्पेक्ट, ही हैड मेरे को याद किया, बुलाया। हाँ पूछे तो मैं कुछ बताऊं। What about, when you were making movies with music by Shankar Jaikishan,
Was there any involvement from you, or you would tell them what was required and they would record the music and give you? I told you about Professor. Okay. So the rest of the movies also were the same way? Yeah. Okay. Now that has come to Amar Pali. Yeah. Amar Pali शुरू की. So they have not come to Shami. Personal दोस्ती गड़बड़ हो गई थी. But that we were making Amar Pali. तो अमर पाली में उन्होंने आए, साइन किया, सुना, उन्होंने मेरे को दूसरे दिन एक गाना सुनाया. मुझे वो गाना मैंने सुना हुआ था पहले, है, और वो गाना जब मैंने सुना मैं यस, अगले दिन वो गाना म्यूजिक रिहर्सल हो गई. लता भाई ने म्यूजिशियंस रिहर्सल नहीं हुई, लता भाई के साथ कुछ म्यूजिशियन ने रिहर्सल कर दी. काटे न कटे रहना मेरे लागे उनसे लेना, कुछ ना कुछ और ट्यून थी खैर, तो उन्होंने रिहर्सल की. तो रात को मैंने